Good evening, students. Arvind, you calculate weekly 6 classes. 10th or 11th October is our last class. Okay. So you calculate how many classes left over. Now, we started permutation combination probability. We have done one subtopic forming number. Okay. I take more question with PYQ later on forming number. So we have a basic idea for forming number, how to do. We take boxes, unit place, 10 place, 100 place. If there is a condition, so you have to fulfill the condition first. Okay. Now next second topic is anagram. Okay. I tell you what is anagram. Online students, am I audible? Like we have a word rock. R-O-C-K. Question is asked, in how many different ways can the letter of the word rock be arranged? Or how many different words by using R-O-C-K can be formed? We can make how many different words? I tell you, we have two type of word. One is this R-O-C-K where we have meaning, or one can be R-C-O-K. I don't know whether it is a meaningful word or meaningless word. There might be some word we don't have meaning of that. So don't worry, no one is going to ask you how many meaningful word can be made by using R-O-C-K, because we are not Shashi Tharoor. Even Shashi Tharoor cannot answer. ठीक है, जितने भी like those are very good in English, उनकी vocab में 10-20 वर्ड एक्स्ट्रा होते हैं बस, और वो वही यूज करके डराते रहते हैं लोगों को. ठीक है. You see any foreign author book during my preparation time, I'm from like almost हिंदी मीडियम, ऐसा ही हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से गया गुजरा ही है टाइप. तो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देयर यूज्ड टू बी वन बुक, लक्ष्मीकांत, नॉट योर्स जो आप पढ़ते हैं, सेम ऑथर हैज रिटन ए बुक फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. 12 चैप्टर होते थे एंड नियरली इन ऑप्शनल, इन प्रीलिम्स देयर यूज्ड टू बी ऑप्शनल. तो 90% क्वेश्चन उसी बुक से आते थे. But in 2006, UPSC changed the pattern and they asked like nearly 30% question from other book. निकोलस हेनरी की एक बुक थी पब्लिक पॉलिसी पे, फॉरेन ऑथर, समझ में ना आए, एंड वी हैव टू स्टडी ओनली 80 पेजेस ऑफ दैट. तो मैं तो डिक्शनरी लग के बैठ गया. मे बी वन डे आई विल रीड वन पेज ओनली, आई विल चेक ऑल द वर्ड, आई विल, बट आई हैव टू रीड इट. I tell you, like quickly I completed that book. Starting at 5 pages, I faced the problem. After that, I realized this author is not doing anything, using the same word again and again. So every foreign author, they have some extra word in their vocabulary, and in the entire book, they keep on repeating the same word. But come to the point, see here, no one can find how many meaningful word can be formed by using R-O-C-K.
So what is anagram? Anagram include both type of word, meaningful, meaningless. So it's like in how many ways it can be arranged. It can be arranged. मतलब इससे कितने different pattern बन सकते हैं, but we have to use R once, O, C, K. We have to use this. So this is anagram question. So what I will do, type one question like this question only, rock, R-O-C-K. In how many different ways can the letter of the word rock be arranged? So how we handle? See here, there are 4 alphabet, so we take 4 place. Now here, at this place, you can use any of this R, O, C, K. It can be filled in 4 ways. Here, if you have used R, you can't use R again. You can't put R or one extra R. Well, here, point is repetition is not allowed. Achha, one more thing, forming number, what we have done yesterday, there are 2 type. Repetition of the digit is allowed, repetition of the digit is not allowed. Examiner will clearly mention, यूपीएससी का एग्जामिनर अच्छा है, वो क्लियरली बता देता है रिपीटिशन द डिजिट इज अलाउड और रिपीटिशन द डिजिट इज नॉट अलाउड. बट इफ नथिंग इज मेंशन इन फॉर्मिंग नंबर क्वेश्चन, रिपीटिशन इज अलाउड. अगर उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो यू हैव टू फाइंड रिपीटिशन द डिजिट इज अलाउड. But in this type of thing, you can't use R again. Here, repetition of R is not allowed because you have a single R. आपके पास एक ही R है, आप एक ही बार यूज कर सकते हो. You have single O. So if you have used R here, you have option. You can use O, C, K. It can be filled in 3 ways. For example, you have used C here, so you can put either O or K. It can be filled in 2 ways. If you put K here, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ O बचा. It can be filled in 1 way. So your answer will be 4 into 3 into 2 into 1, 24. In how many different ways can the letter of the word rock will be arranged? At first position, you have 4 options. Then you have 3, then you have 2, then you have 1. Because you can't put R. Repetition is not allowed. R आप एक ही बार use कर सकते हैं. Because you have 1 R. You can use only 1 No because you have 1 No only. You can use C once because you have only 1 C available. You can use K once because you have only 1 K available. So you can say answer is 1 into 2 into 3 into 4, or you can say your answer is 4 factorial. In how many different ways can the letter of the word rock be arranged? Answer is there are 4 alphabet, 4 factorial. Let me take some extra question. Like here, Delhi, D-E-L-H-I. Question is, in how many different ways can the letter of word Delhi will be arranged? So what you do, simple shortcut, 1, 2, 3, 4, 5. If there are 5 alphabet and there is no repetition, मतलब D 2 बार use नहीं है, simple answer 5 factorial. How? Like here at first position you have 5 options. You can put D, you can put E, you can put L, you can put H, you can put I. Next you have 4 options, क्योंकि एक option यहाँ खत्म हो चुका होगा. Here you will have 3 options. Here you will have 2 options. Here you have last option. And you have to multiply, and it is nothing, it is 5 factorial. So our question is, in how many different ways can the letter of the word be arranged? It is 120 is your answer, or you can say 5 factorial. Like my next question, pencil. Our question is, in how many different ways can the letter of the word pencil be arranged? So here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 alphabet and all 6 are different alphabet. Our type 1 is we have all different alphabet. P 2 बार use नहीं, एक बार use है. So here your answer is, if there are 6 alphabet, your answer is 6 factorial. So what is 6 factorial? 720. Okay. Like you try this question, merit. M-E-R-I-T. In how many different ways can the letter of the word merit be arranged? क्या आंसर है? Random. R-A-N-D-O-M.
It is 5 factorial. My next question is random. RANDOM. Okay. So these are 6 and no alphabet is repeated. All are different. 6 factorial. What is 6 factorial? 720. Can you tell me any word having all the 5 vowels? A, E, I, O, U. कोई भी? Tell me any word having all the 5 vowels. मतलब not related to mathematics, general knowledge question. कौन सा क्वेश्चन? प्रेटिपिसिएशन क्या कह रहा? डेप्रिसिएशन. एजुकेशन. परमुटेशन आ रहा है इसमें. वन इज एजुकेशन. इक्वेशन. परमुटेशन चेक करता हूं मैं, मेरे को डाउट है. परमुटेशन में भी आ रहा है. AEIOU. बट एजुकेशन एंड परमुटेशन में डिफरेंस क्या है? हियर टी यूज ट्वाइस. ठीक है. यहां पे ईच एंड एवरी अल्फाबेट इज डिफरेंट एंड वी हैव ऑल द वोवल यूज वंस. चलो, वी विल डू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट बिलोंग टू अवर टाइप 1. Education. Our question is equation. Yes, you can do. Automobile. AUOI. Automobile भी you can do. Fine. Now here our question is, in how many different ways can the letter of the word education be arranged? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Your answer is 9 factorial. 9 factorial. Because all 9 alphabet are different in this question. Any doubt in this type 1 question? Simple. मतलब long method इसका ये है. First place can be filled in 9 ways because we have 9 alphabet available. Next can be filled in 8 ways. Then 7, then 6, then 5, 4, 3, 2, 1. And we have to multiply. If you multiply, you get 9 factorial. Tell me, what is the value of 9 factorial? 36288. ये कुछ 4 समथिंग क्या था? 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 40320. 9 factorial is 3,62,880. So it is 9 factorial. Now next is type 2 question. Let us compare type 1 and type 2 question. Type 1 question is the word ROCK, where all the 4 alphabet are different. Same topic, but we have some alphabet are same, like room. ROOM. I tell you what is the difference. If we have to arrange alphabet here, for example, you take R at the same position. You take K at the same position, only O and C you interchange. आप सिर्फ O और C interchange कर रहे हो. COK. ROCK is different. RCOK is different. But in this case, you write R here, you write M here, you interchange this O, you get O here, you get O here. So you can say this room is same, this room is same. You can't say this room is different, this room is different. This is from Make My Trip, this is Oyo room. Okay. Or like sometime you see this spelling, social media पे लिखा होता है SCHOOL. फिर लिखा होता है you have written the wrong spelling of school because you have written second O before first O. आपने second O को first O से पहले कैसे लिख दिया? What is second O? What is first O? All O are same, similar. Since we have identical alphabet O and O, we will have less number of pattern.
यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करने पे वी आर गेटिंग न्यू पैटर्न. हियर यू आर गेटिंग द सेम room. So what is our shortcut for type 2 question like this room? There are two things, numerator and denominator. Step number 1, we will see how many alphabet are used. So it is 4 factorial. But since all 4 alphabet are not different, there is O used twice that come in denominator. Repetition. O is getting repeated. Matlab O is used twice. So that we always have in denominator. Our correct answer is here 4 factorial upon 2 factorial because there are 2 O. That's why we take denominator. Your answer is 24 divided by 2, 12. So in how many different ways can the letter of the word room be arranged? Your answer is 4 factorial upon 2 factorial, 12. Let me take some extra question. Like I take MOOC, MOOC. Okay. Step number 1, there are 5 alphabet, 1, 2, 3, 4, 5. So it is 5 factorial. O is repeated thrice, so divided by 3 factorial. Either you can do 120 divided by 6, so your answer 20. But I tell you one thing about factorial, which will save your time in permutation combination topic. 5 factorial you can write as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial is 3 into 2 into 1. You can cancel it. But even you can save your time. यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial. क्योंकि 3 into 2 into 1 3 factorial तो होता है. इसके बाद की वैल्यू इज नथिंग दैट इज 3 factorial. 3 factorial and 3 factorial cancel. Your answer here is 20. I just explain. देखो, if in a question you have 10 factorial upon 8 factorial. परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीजें यूज होने वाली है. Either you calculate what is 10 factorial, you calculate what is 8 factorial, you divide, or you write 10 into 9 into 8 into 7. भाई इसके बाद जो वैल्यू है 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, वो है क्या? वो 8 factorial ही तो है, and divided by 8 factorial. So 8 factorial cancel, so your answer is 90. So you can save your time. If it is asked 10 factorial upon 8 factorial, so 10 factorial you can break it as 10 into 9 into 8 factorial. क्योंकि 9 के बाद की वैल्यू इज नथिंग दैट इज 8 factorial on. Now come to the topic. Now my question is marker. MARKER. In how many different ways can the letter of the word marker be arranged? Step number 1, we will see how many alphabet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 6 factorial. Is there repetition? R is used twice upon 2 factorial. Here 6 factorial is 720, 2 factorial is 2. So your answer is 360. Now you try question. In how many different ways can the letter of the word school, SCHOOL, be arranged? Same. Because we have 6 alphabet, so 6 factorial. O is used twice upon 2 factorial. So your answer is 720 upon 2. If you simplify, you get 360. Let me discuss more question here on type 2. First you try, if you get stuck, I will help you out. In how many different ways can the letter of the word success, SUCCESS, be arranged? In how many different ways can the letter of the word success be arranged?
You have to be 420 for the success. अब तो बदल गया है 420. आंसर इज 420 क्योंकि मुझे याद है हर 420 सक्सेसफुल है टाइप. तो इसका आंसर मुझे याद है, बाकी का नहीं याद है. I tell you, maybe some of you are doing mistake. Step number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 factorial. S is used thrice, 3 factorial. C is used twice into 2 factorial. So here we use 3 factorial because S is used thrice. जितने भी repeat होंगे 2 factorial because C is used twice. अच्छा, इन वन ऑफ द बैच एक कलाकार इंसान था, उसने क्या किया 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल लिख दिया. डोंट डू दिस. मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डजंट मीन्स 5 फैक्टोरियल. और डोंट ट्राई कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होगा. उसने क्या किया 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल. चेक कर लो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 6, व्हाट इज 2 2, तो क्या होगा 12 और 6 फैक्टोरियल होता है 720. तो नेवर एड दिस, नेवर थिंक कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल. इट इज नॉट एप्लीकेबल है, फैक्टोरियल में नहीं काम करेगा. यू हैव टू टेक इट सेपरेटली. 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो हियर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है, बट फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं पूरा लिख देता हूं. 3 इंटू 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये कैंसल, यहां से ये 2 आ जाएगा. 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 6 42, 14 इंटू 10 420. So in how many different ways can the letter of the word success be arranged? 420. Denominator में you have to take 3 factorial and 2 factorial. 3 factorial because of 3s, 2 factorial because of 2c. And don't add, don't multiply. इसको solve करना है पूरा. 3 factorial into 2 factorial is never 6 factorial. 3 factorial into 2 factorial, don't take it as 5 factorial. कभी भी नहीं होता है. 3 factorial into 2 factorial is 12, जो किसी factorial के equal है ही नहीं. You have to take separately. Now you try banana. In how many different ways can the letter of the word banana be arranged? Let me take this banana, you will understand, online student. क्योंकि इसमें टाइप 2 में क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही अल्फाबेट रिपीट होगा, दो दो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं. A is used thrice and N is used twice. How many total alphabets? Step number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So your answer is 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. What is 6 factorial? 720. This is 6 into 2, which is 12. या 6 को इसको काट दो 120. If you cancel it, 60 is your answer. 60. I repeat, numerator 6 factorial because of there are 6 alphabet. Denominator we take 3 factorial because of 3a, and we take 2 factorial because of 2n. If any alphabet is used more than once, we take in denominator. जो भी alphabet repeat है, we have to take that in denominator. We have to take 3 factorial because of 3a. We take 2 factorial because of 2n. Now take your time. In how many different ways can the letter of the word national, National, national be arranged?
Step number 1, how many alphabet? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 factorial. N is used twice, 2 factorial. A is used twice, 2 factorial. कुछ और रिपीट है नहीं है. So here you can take total value of 8 factorial. अगर याद है 40,320 divided by 4. So your answer is 10,080. If you don't remember, then it is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 2 into 2 4, 4 से 4 कट जाएगा. You have to multiply it. तो क्या करेंगे? 3 into 2 6, 6 into 5 30. 56 into 6, 56 into 180. If you multiply it, you get 10,080. Any doubt? Numerator, denominator. Try one more question. Football. In how many different ways can the letter of the word football be arranged? After that, one more question. सेम आंसर आ रहा है फुटबॉल का. किस्मत अच्छी है तुम्हारी. इंटरनेशनल. ओके, अब नहीं होगा सेम आंसर. ट्राई दिस. बेट 13. चलो मुझे बता दो, बस कैलकुलेशन घर कर लेना. क्या होगा 13 फैक्टोरियल? 13 फैक्टोरियल. रिपीट क्या क्या हो रहा है? आई कितनी बार रिपीट है? 2 बार. एन कितनी बार रिपीट है? 3 टाइम्स. ए 2 टाइम्स. और क्या? टी 2 टाइम्स. और तो here 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Okay, next type 3. You can calculate this at your home. Type 3. Okay. Later on I use this anagram concept for other things also. Number के लिए भी use करूंगा, but I will link it. You have to remember the pattern कि like here, if the word is ROCK, so it is 4 factorial. There is no identical. But if it is ROOM, since O and O is identical, 4 factorial upon 2 factorial. Now next is we have question with condition. Question with condition like in how many different ways
can the letter of the word merit be arranged so that vowels are always together? जो vowels हैं वो हमेशा साथ साथ हो. Let me explain this. Okay, then we will practice similar question. There is a condition that vowels are always together. Have been to any park? Buddha Janti Garden? ठीक है, नहीं कोई और पार्क अदर देन सिंधी पार्क? क्योंकि यहाँ तो लाइटें बहुत जल रही है. अग्रसेन, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, लोधी गार्डन. लास्ट ईयर लाइक वी हैव टेकन ट्रिप ऑफ द स्टूडेंट टू पुराना किला. वहां डिस्टर्ब कर रहे हैं यार लोगों को. चेक कर रहे हैं कितना गैप है बीच में. नाउ है सो मुंबई में छतरी के नीचे. सो हेयर क्या होगा तुझे? सो यू कैन सी देयर इज ए बेंच. ठीक है, वहां पे ई और आई, देयर आर टू वोवल ई एंड आई, दो जिस्म एक जान. तो ई एंड आई हैज टू बी टुगेदर. Question is vowels are always together, so E and I has to be together on a single bench. We need a separate bench for M, separate bench for R, separate bench for T. ठीक है, ये हक से सिंगल टाइप अलग अलग बैठेंगे बिल्कुल ऐसे. M अलग बैठेगा, R अलग, T अलग, E and I together because condition is vowels are always together. So now here step number 1 is we need 4 benches. 1, 2, 3, 4. Next day you find M is sitting here. E and I are sitting on the second bench. Maybe you find R is sitting here. E and I is sitting here. But E and I have to sit on the single bench. They have to be together. So in how many ways we can change their position? 4 factors. 4 factorial. Okay, step number 1. How many benches we need so that E and I together? So you make E and I sit on a single bench, M separately, R separately, T separately, 4 factorial. बट अभी पिक्चर बाकी है. अगर आपने ध्यान से देखोगे, कभी E I की गोदी में, कभी I E की गोदी में. मतलब sometimes you find E I or sometimes you find I E. E I give you a different pattern. ठीक है, I E give you a different pattern. So here step number 2, you have to multiply with vowels. How many vowels are there? 2. So 2 factorial. Because these vowels can change their position in how many ways? 2 factorial. वो अपनी position भी तो बदल सकते हैं. See, one is I E M R T. This is one way. But next day, if I say E I M R T, is it same or different? Different. If you change the position of E or I, you get a different pattern. So in how many ways we can change the position? 2 factorial, because there are 2 vowels. But it can be M E I R T, or it can be M I E R T. बट इन ईच एंड एवरी पैटर्न ई और आई साथ साथ हो. ऐसा ना हो ई यहां और आई वहां. दैट इज नॉट अलाउड. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू डू, यू कंसीडर ई आई आर टुगेदर. तो उनको एक एंटिटी मानो पहले. तो हाउ मेनी बेंचेस वी नीड? 4. सो 4 फैक्टोरियल. बट नाउ ई एंड आई कैन चेंज देयर पोजिशन, तो इंटू 2 फैक्टोरियल. सो आवर आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. Let me take some extra question. Pencil. Question is, in how many different ways can the letter of the word pencil be arranged
so that vowels are always together. जो vowels हैं वो एक साथ हो. So step number 1, you take this both vowel together, E and I. Next we take P here, we take N here, we take C here, we take L here. We need single bench for this two vowel. 1, 2, 3, 4, 5. We need 5 benches, 5 factorial. But this E and I can change their position in how many ways? How many vowels are there? 2. So 2 factorial. So your answer is 120 into 2, 240. So our question is, in how many different ways can the letter of the word pencil be arranged so that vowels are always together? जो vowel है वो हमेशा साथ साथ रहे. Let me try some extra question. Like laptop. Laptop. Question is, in how many different ways can the letter of the word laptop be arranged so that vowels are always together? How many vowels are there, sir, in this question? 2. कौन से? A and O. तो A और O को साथ साथ रखना है. L को अलग. अच्छा अभी रुको, ये इसमें थोड़ा सा डाउट है. अभी I will take it later. लैपटॉप को अभी होल्ड पे डालो. एजुकेशन. टाइप 3 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं. टाइप 3 के इजी क्वेश्चन, टाइप के थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन. आई विल टेक लैपटॉप आफ्टर 5 मिनट. वेट, माय मिस्टेक, थोड़ा जल्दी ले लिया मैंने लैपटॉप. एजुकेशन. क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन बी अरेंज्ड so that vowels are always together? How many vowels are there? 5. मतलब कब तक कपल लगेंगे, आगे फैमिली भी तो बढ़ाएंगे. यहां हस्बैंड वाइफ, चुन्नू, मुन्नी, मुन्नू. ठीक है, 5. फिर डी, क्या क्या बच गया? सी, टी, एन. एक बेंच पे पूरी फैमिली. सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, फिफ्थ बेंच. Step number 1, how many bench? 5. In how many ways it can be arranged? 5 factorial. How many vowels? 5. So into 5 factorial. So your answer is 5 factorial into 5 factorial. Tell me why this 5 factorial? Because we need 5 benches. Why we need second 5 factorial? Because there are 5 vowels. ये 5 vowels बैठेंगे एक साथ. But it is not fixed कि you always make E to sit first. यहाँ U भी बैठ सकता है, A भी बैठ सकता है. You can change their position in how many ways? 5 factorial. So your answer is 120 into 120, 14,400. Is your answer. You try one question. In how many different ways can the letter of the word random, RANDOM, be arranged so that vowels are always together? How many vowels are there? 2. A and O. बाकी बचा R, N, D, M separately. How many bench we need? 5. 5 factorial. How many vowels are there? 2 into 2 factorial. So your answer is 120 into 2, 240. Is this step clear? Next is laptop. Now we will do this question, laptop. LAPTOP. Question is, in how many different ways can the letter of the word laptop be arranged so that vowels are always together? Step number 1, on a single bench, we take this 2 vowel, A and O, L separately, P separately, T separately, P separately. There are 2 P, but this 2 P have to be separate. Step number 1, how many benches you need? 1, 2, 3, 4, 5. So here it is 5 factorial. Take care of vowel, 2 factorial. Take care of repetition. Repetition in any of the question always come in denominator. There are 2P, so because of 2P, we divide it by 2 factorial.
You just ask question to yourself, why 5 factorial? Because we need 5 benches. Why 2 factorial? Because there are 2 vowel. And why in denominator there is 2 factorial? Because of 2p. अगर रिपीटिशन होगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा. Because of 2p we will have less number of pattern. 2 factorial cancel. What is 5 factorial? 120. So your answer is 120. Now we try some extra version. Marker. MARKER. You try, in how many different ways can the letter of the word marker be arranged so that vowels are always together? So here, vowels together, there are 2 vowels, A and D. Then we have consonant M, R, K, R. Step number 1, how many total benches we need? 5. 5 factorial. How many vowels are there? 2. 2 factorial. Is there any repetition? जितना भी repetition हो denominator में चला जाएगा. That repetition can be vowel, can be in consonant. कोई भी repetition हो, वो सारा repetition denominator में जाएगा. 2 factorial cancel. Answer is 120. Like football. Question is, in how many ways can the letter of the word football be arranged so that these vowels are always together? Okay, first you try, then I tell you. अगर कोई गलती करेगा तो I will help you out. जितना भी रिपीटिशन है डिनोमिनेटर में जाएगा, चाहे वो वोवल हो चाहे कंसोनेंट हो. पहले हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? 3. A, O, O. Then F separately, T separately, L, B separately, L separately, L separately. How many bench? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many vowel? 3 into 3 factorial. Why 6 factorial? Because 6 benches. Why 3 factorial? 3 vowel. Denominator 2 factorial for 2L, 2 factorial for 2O. O भी तो सेम है. That you have to take जितने भी repetition denominator में लेने हो. So now here 720 into 6, 2, 2. This give you 360. This give you 3. 360 into 3, 1080. क्या चीज इसमें है ना? क्वेश्चन में है ना? One more. In how many different ways can the letter of the word success, SUCCESS, be arranged such that vowels are always together? Okay. एक बेंच पे U and E,
S separately, C separately, C separately, S separately, S separately. So now here it is 6 factorial into 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. This 2 factorial cancel. This is 720 upon 6. Your answer is 1 point. Now here, how we can apply the same concept what we have learned for anagram in arranging people. I just take 1 or 2 examples. How we can apply the same thing in other topic. I will discuss anagram in arranging people. Then I will teach topic coins, where we use probability. And there also I help you out. This anagram topic will help you there also. Okay? We will connect this. Now my question is, there are 4 boys and 4 girls. 4 boys or 4 girls hai. Question is, in how many different ways they can be seated so that all the 4 girls are always together. Try this question. चारों गर्ल्स हमेशा एक साथ बैठे. क्या आंसर आ रहा है? 120. 5 आ रहा है किसका आंसर? Now here, on this bench 4 girls. Here boy, 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 boy. How many total benches we need? 5. 5 factorial. How many girls are there? 4 factorial. Some student, what they do, they take 5 factorial, 4 factorial. They see 4 girls, 4 boys. They divide by 4 factorial, 4 factorial. Here, let me tell you one thing. All 4 girls are different. In this world, no 2 girls are same. इन 4 को तो छोड़ दो. And no 2 boys are same. हर बॉय अलग होता है, हर गर्ल अलग होता है. These are not identical. इसको G ना लिख के G1, G2, G3, G4 लिखो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. गर्ल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऑल गर्ल्स आर डिफरेंट. G मत लिखो, गर्ल्स आर डिफरेंट. ठीक है जी, यहां से है. ठीक है, दुनिया में कोई भी 2 लड़की सेम हो ही नहीं सकती, चाहे ट्विंस क्यों ना हो, चिंकी मिंकी टाइप. ठीक है, वो भी अलग है. B1, B2, B3, B4. तो इन दिस क्वेश्चन डिनोमिनेटर विल नॉट कम. और पीपल के केस में डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट. नेवर वी हैव 2 पर्सन आइडेंटिकल, इवन ट्विंस ऑल्सो. दोनों ट्विंस है तो भी नहीं. आइडेंटिकल ट्विंस तो बोल दोगे, यू कांट से दिस 2 पर्सन आर आइडेंटिकल. You use the word identical twins, but you can't say these 2 person are same. Identical नहीं होते हम. So here our answer is 5 factorial into 4 factorial. So your answer is 120 into 24, 2880. In case of person, you can apply. That is good. Like you are able to use this concept कि हमने ये देखा कि एक बेंच पे चारों गर्ल्स को बिठाना है, but these girls can change their position. But the point is, don't take denominator because girls are different, boys are different. तो यहाँ पे 5 factorial into 4 factorial, answer is 2880.
Is it clear of you? My question: 4 boys, 4 girls. In how many ways, different ways they can be seated? The condition. In how many total ways they can be seated? कितने total ways से बिठाया जा सकता है? What is that? 8 factorial. There are 8 boys, girls. They can be for here are 8. 8 chair. 1, 2, 3, 5, 7. And you have 4 girls and 4 boys. On the first chair, any one of these can sit. Here, remaining 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So your answer is 8 factorial. If there is no condition, 8 factorial. क्योंकि 8 लोग हैं, 8 लोगों को 8 चेयर पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 8 factorial. Is it clear? Any doubt in this? 8 factorial. Any doubt in this? कहाँ गया वो? 5 factorial into 4 factorial. अच्छा, मैंने रब कर दिया. Fine. Now next topic we will take question on coin. देखो, अभी चीजें कलेक्ट करते जाओ. Forming number, whatever I have taught you, keep in mind. Anagram, have a idea कि how we handle anagram. I will help you out to connect the things. धीरे धीरे करके चीजें कनेक्ट करेंगे. But before I take coin, let me brief you about probability. Probability. नेटवर्क इशू. यस, मेरे को भी लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू है. चंदन को बोलना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है, चेक करेगा, नहीं तो दूसरा वाईफाई कनेक्ट करेगा. आई विल रिपीट, मतलब टोटल वाला रिपीट कर देता हूं. वाईफाई की एक बार स्पीड चेक करना, थोड़ा सा लैग हो रहा है. See here, my question is, there are 4 boys, 4 girls. In how many total ways they can be seated? So here you have B1, you have B2, B3, B4, G1, G2, G3, G4. Okay, at this position, any of these 8% can sit. For example, B1 will sit. इस पे how many persons you have? 7. तो इन 7 में से कोई भी बैठ सकता है. For example, B2 sit here. For example, G1 sit. ठीक है. Now you have 5 remaining. 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे कितने तरीकों से you can fill this space? 5 ways. Here, in how many ways you can fill this space? 1, 2, 3, 4 ways. This is 3, 2, 1. लास्ट में जब एक चेयर बचेगी, you have only one person, you have one chair. That last person is not having any choice. He or she has to sit on the remaining one chair. You multiply, and what is this? 8 factorial is your answer. So we have 8 factorial because it is like 8 alphabet and all are different. In how many ways it can be arranged? 8 factorial. There is no repetition. There is no identical alphabet. Girls are different, boys are different. रिपीटिशन किसका रिपीटिशन? मेरे को रिपीटिशन नहीं समझ. रिपीटिशन से क्या कहना चाह रहे हो? विदाउट रिपीटिशन नहीं, कि विदाउट कंडीशन. हाँ, आप कह रहे हो नंबर ऑफ चेयर ज्यादा है. मैंने ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा ही नहीं. ठीक है, ऑनलाइन वालों.
Now here coin mein we have question related to probability. We will see the basic part related to probability. Probability is favorable event divided by total event. Like for example, we toss one coin. If you toss one coin, how many event you have? You have two event. Either you get head or you get tail. And you will win if you get head. So head is your favorable event. So your favorable event become 1, your total event become 2. So your winning probability is 1/2 or 50%. And I tell you, probability we can see in fraction or percentage. Probability हम हमेशा fraction या percentage में देखते हैं. In fraction, it always lie from 0 to 1. Minimum probability is 0. Maximum probability of happening any event is 1. Or in percentage, it is 0% to 100%. What is the probability that it may rain today? I will say 40%. So 40 for favorable, total 100. Maximum probability can be 100%. 100 से ज्यादा probability नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती. So here your probability of any event is 0% to 100%, or in fraction it is 0 to 1. What is 1/2? 50%. So we can calculate probability in fraction or in percentage. And what is probability? Probability is favorable event divided by total event. This is one concept. Second concept here is, if I ask you we toss one coin and there will be two events, either head or tail, and I need head. So it means head become my favorable event. If it come tail, what is tail? Non-favorable event. So you write second formula is total events is always equal to favorable events plus non-favorable events. जो टोटल इवेंट्स होती है वो हमेशा फेवरेबल इवेंट प्लस नॉन फेवरेबल इवेंट होती है. ओके, थर्ड कंसेप्ट आई टेल यू लेटर. अभी मुझे थर्ड कंसेप्ट की जरूरत नहीं है. आई नीड दैट इन केस ऑफ कार्ड क्वेश्चन. व्हेन आई विल टीच कार्ड क्वेश्चन, ठीक है, देन आई विल टीच. मुझे आज दो ही कंसेप्ट चाहिए. सो नाउ हियर वी वर्क ऑन कॉइन. We see number of coin and we see total event, and we will understand this concept. If I use one coin, I toss one coin, what I get? Either head or tail. So can we say total event are 2? Total event 2 होंगी, head या tail. Tell me, if I use two coin, how many total events are there? 4. क्या क्या? Head head, head tail, tail head. Some students, they get confused, they think both event are same. No, if you are getting first head second tail is different from first tail second head. मैंने coin उछाले एक एक करके. I use two coin. First option is I get head, I get head. दोनों में head आ जाए. Second event is I get first coin give me head, second coin give me tail. Or first coin give me tail, second coin give me head. It is different. These are not same. Or both coin give me tail. So there are 4 event. Now tell me, one coin give you 2 event, 2 coin give you 4 event. If I use 3 coin, how many events are there? Not 6, 8. यहाँ पे 8 इवेंट होते हैं. बता देता हूं कैसे. मैनुअली हेड हेड हेड, तीनों हेड आएंगे. देन वी कैन हैव 2 head 1 tail. 2 head 1 tail. हाउ टू फाइंड टोटल इवेंट? फोकस ऑन टेल. 2 हेड पे ध्यान मत देना, एक टेल पे ध्यान दो. टेल एट थर्ड पोजीशन, टेल एट सेकंड पोजीशन, टेल एट फर्स्ट पोजीशन. 3 इवेंट यहां बनेंगे. फिर है कि 1 head 2 tail.
2 पे मत ध्यान दो, 1 हेड पे ध्यान दो, क्योंकि एक को चेंज करना इजी है. हेड एट फर्स्ट पोजीशन, हेड एट सेकंड पोजीशन, हेड एट थर्ड पोजीशन. 3 हेड आ सकते हैं, 2 हेड 1 टेल आ सकता है, 1 हेड 2 टेल आ सकता है, और क्या बचा, तीनों की तीनों टेल आ सकते हैं. 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, तो टोटल इवेंट 8. I tell you the concept behind this, because examiner asks you, I have tossed 10 coin, you can't check manually. The number of event is 2 ^ x. From where we are getting to, every coin have 2 face. हर coin के 2 face है, head tail. X here is number of coin used. If I use 1 coin, total event 2. If I use 2 coin, total event 4. If I use 3 coin, total event 8. If next time if I use 4 coin, tell me how many total event will be there? 16. No need to check manually. That is going to time consuming, because 2 ^ 4. If I use 5 coin, how many total events are there? 32. If I use 6 coin, 2 ^ 6. So total number of event in case of coin is 2 ^ x. X represent number of coin. If I use 1 coin, 2 event. If I use 2 coin, 4 event. If I use 3 coin, 8 event. If I use 4 coin, 16 event. I use 5 coin, 32 event. I tell you, it depends on the language of the question. X represent number of coin और number of toss. डिपेंड कि भाई वो कॉइन से कौन खेल रहा है, अमीर खेल रहा है या गरीब खेल रहा है. खेलेगा तो गरीब का बच्चा भी. अमीर का बच्चा क्या करेगा, वो हर बार अलग कॉइन उछालेगा. हैव 5 कॉइन, विल टॉस 5 डिफरेंट कॉइन, 5 कॉइन. गरीब का बच्चा क्या करेगा, एक ही कॉइन को 5 बार उछालेगा. तो लैंग्वेज इन दैट क्वेश्चन इज 1 कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स और 5 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो x रिप्रेजेंट हियर नंबर ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ टॉस. या तो आपने 5 कॉइन उछाले या एक ही कॉइन को 5 बार उछाला. इफ यू टॉस द सेम कॉइन 5 टाइम्स, नंबर ऑफ इवेंट 2 ^ 5 32. क्योंकि पहला टॉस आपको तो 2 इवेंट देगा, हेड और टेल. दूसरा टॉस ऑल्सो गिव यू 2 ऑप्शन, हेड और टेल. थर्ड कॉइन ऑल्सो, थर्ड टॉस ऑल्सो गिव यू 2 ऑप्शन. फोर्थ टॉस ऑल्सो गिव यू 2 ऑप्शन. फिफ्थ टॉस ऑल्सो गिव यू 2 ऑप्शन. So here X depend on the language of the question. It can be number of coins or it can be number of toss if we are using the same coin again and again. ये अगर हम same coin को बार बार यूज करेंगे, ये number of toss बन जाएगा. Is this clear? मैंने यही तो एक्सप्लेन किया. आपकी पहली पोजीशन पे हेड आ रहा है या दूसरी पोजीशन पे हेड आ रहा है, बोथ आर डिफरेंट. दिस बोथ आर डिफरेंट. ओके, दिस इज अबाउट टोटल इवेंट. नाउ वी विल वर्क ऑन फेवरेबल इवेंट वन बाय वन. माय क्वेश्चन इज, 1 coin is tossed. Find the probability of getting head. How many favorable event? 1. Head एक ही आएगा. And how many total event? 2. So our answer is 1/2. My next question. 1 coin is tossed. Find the probability of getting tail. What is your answer? Tail 1 event, total event 2. Answer is 1/2. Now next is 2 coins are tossed. I will ask you 3-4 questions based on 2 coins are tossed. Find the probability of getting. ठीक है, be careful. Exactly 1 head. Exactly 1 head. How it is possible? You get exactly 1 head. You get head tail or tail head. पहली इवेंट में हेड आ जाए या दूसरी इवेंट में हेड आ जाए. तो वी हैव 2 फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ 4. मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, मींस अदर हैज टू बी टेल. कैसे पॉसिबल होगा? दैट फर्स्ट कॉइन गिव यू हेड, सेकंड कॉइन गिव यू टेल, और
First coin give you tail, second coin give you head. Are you getting this point? फेवरेबल जिससे आप जीतोगे. मैंने कह दिया आई नीड एग्जैक्टली वन हेड. मैं फेवरेबल बता रहा हूं अभी, एक मिनट. जस्ट वेट. टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. आपने कॉइन उछाला, पहला भी हेड आ गया, दूसरा भी हेड आ गया. आप जीतोगे, हारोगे? हारोगे. आपको सिर्फ एक हेड चाहिए था, और दोनों टेल आ गए तो भी आप हारोगे. जहां पे आप हार रहे हो नॉन फेवरेबल है. आपने उछाला, पहला हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया, आप जीत जाओगे. या पहला टेल आ गया, दूसरा हेड आ गया, तो भी आप जीत जाओगे. तो आपके लिए फेवरेबल क्या हुआ? पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड. एग्जैक्टली वन हेड. या पहले इजी क्वेश्चन ले लेता हूं. टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड. मतलब दोनों हेड आएंगे तो आप जीतेंगे, नहीं तो आप हारेंगे. ठीक है. इफ यू आर यूजिंग टू कॉइन, हाउ मेनी टोटल इवेंट्स आर देयर? 4. देखो टोटल इवेंट आपकी कॉइन्स बता देंगे. इफ आई एम यूजिंग टू कॉइन, टोटल इवेंट 2 is to power 2. If I'm using 3 coin, total event 2 is to power 3. If I'm using 4 coin, total event 2 is to power 4. If I'm using 5 coin, total event 2 is to power 5. तो total event 4 होगी. I need 2 head. So what is favorable? First head, second head. So how many events are there? There is only single event. So your answer is 1/4. Now my question to you, two coins are tossed, find the probability of getting two tail. दोनों की दोनों टेल आई. टोटल इवेंट 4, फेवरेबल इवेंट टेल एंड टेल. So you have only one favorable event, total events are 4. Next question, two coins are tossed, find the probability of getting exactly one head. How many total event? 4. Exactly one head. You check manually. अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, मैनुअली चेक कर सकते हो. कैसे चेक करेंगे? हेड टेल और टेल हेड. So you have one this favorable event, second this favorable event. You have 2 favorable event out of 4. Your answer is 1/2. Check manually. Now my next question. Two coins are tossed. Find the probability of getting exactly one tail. Exactly one tail. Same. Exactly one tail कब आएगा? Tail, head, head, tail. So there are 2 event out of 4. Your answer is 1/2. My point. There are 2 things you have to manage: numerator upon denominator. Numerator is favorable event. Denominator is total event. I have given a simple rule for total event. Total event is 2 is to power x. X is number of coin. If I'm using 2 coin, how many total event? 4. Is there any confusion about this? No. Favorable for the initial question we check manually. When you are using 2 coin, आपकी 4 event बनती है. क्या क्या? Head, 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 tail, tail, head, tail, tail. Then you check according question which will help you. If I ask 2 head, this event will help you. So you have only one favorable event out of total 1/4. If I ask that you will win if you get 2 tail, तो it means how many, आपके लिए कितनी favorable event है? एक, कितनी में से? 4 में से. If I ask if you get exactly one head you will win, otherwise you lose. दोनों head आ गए तो भी आप हारेंगे. 0 head मतलब दोनों tail आएंगी, then also you are going to lose. If I need exactly one head, we have head and tail, tail and we have 2 events which are in favor of us out of 4. If I ask exactly one tail, so here this and this 2 event are in your favor. Let us try for 3 coin manually. I'm not using any formulas right now. अभी तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. Then I will connect the things. I will tell you how we can solve bigger question in less time. And without manually, क्योंकि हमें सीखना है कि बिना मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे. 3 coins are tossed. Find the probability of getting all 3 head.
भाई तीनों के तीनों हेड आएंगे तो आप जीतेंगे, नहीं तो आप हारेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टोटल इवेंट, 3 coins are tossed, total event 2 is to power 3 8. So numerator upon denominator, here denominator is 8. What about numerator? We need 3 had. So there is only one event which is in your favor. Your answer is 1/8. Anyone having doubt here? Next question. 3 coins are tossed. Find the probability of getting all 3 tail. 1/8, because total event 8, favorable event tail, tail, tail. There is only one which is in favor of you. So the answer is 1/8. Now next question, be careful. Denominator is simple. Total event will not trouble you because 2 is to power x. Total event में problem नहीं है. Favorable के लिए you have to be careful. 3 coins are tossed. Find the probability of getting exactly one head. Exactly one head means other 2 has to be tail. One head, 2 tail. Try. One head, 2 tail कब कब आएगा? Head, tail, tail. जब वन हेड होता है हेड की पोजीशन बदल दे जाओ, टेल हेड टेल 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 हेड, हेड एट फर्स्ट पोजीशन, हेड कैन बी एट सेकंड पोजीशन, हेड कैन बी एट थर्ड पोजीशन. तो हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट आर देयर? 3 out of 8. One more question. 3 coins are tossed. Find the probability of getting exactly 2 head. Exactly 2 head. So here head, head, tail. Change the position of tail. Head, tail, head, tail, head, head. So there are 3 favorable event out of 8. So your answer is 3/8. Any doubt? Now here, let me increase the difficulty level. Okay? 3 coins are tossed. Find the probability of getting at least one tail. I'm not asking exactly one tail, at least one tail. ठीक है? कम से कम एक tail. The meaning of at least one is in Hindi meaning कम से कम एक या एक से ज्यादा. What is at least one? One or more than one. आप कब कब जीतेंगे? When you get one tail, or you get 2 tail, or you get all 3 tail. कम से कम एक टेल आनी चाहिए. एक टेल आ गई तो आप जीतेंगे. 2 tail you will win. 3 tail you will win. When you will lose? When it is 0 tail. So you check manually one tail. How it is possible? One tail, tail, 2 head. Head, tail, head, 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 tail. 3 इवेंट यहां होगी. 2 टेल में टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल. तीनों टेल में there is one more event. So you have 7 favorable event out of 8. Okay. Now, my next question is 4 coins are tossed. Find the probability of getting at least one tail. कम से कम एक टेल आए. यहां पे इफ यू चेक मैनुअली 1 tail, 2 tail, 3 tail, 4 tail, it will be time consuming. Let me tell you alternate method which is going to help you out. See here, head is like boy, tail is like girl. Just try to relate. Have you been to any club where couple entry is allowed? Okay. Yeah, group entry is allowed, but at least one girl is there. In Delhi, many club there is a condition: either the couple entry is allowed or at least one girl has to be there. When you will get entry to that club? If
in your group one girl is there, आपको एंट्री मिल जाएगी. If you have 2 girl in your group, you will get the entry. If you have 3 girl in your group, you will get the entry with the red carpet. If you have all 4 girl in your group, you get entry plus free drink also. Okay. When you will not get entry, when all 4 boys are there. 4 बॉयज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक हमारा कपल एक इनका कपल. वो कह रहा भाई ये कपल नहीं चलेगा. फिर वो बाउंसर से लड़ रहे हैं, वो किचन से एंट्री खोज रहे हैं. ठीक है. सो इफ ऑल 4 बॉयज आर देयर, यू विल नॉट गेट एंट्री. सो रादर देन हैंडलिंग द क्वेश्चन विद फेवरेबल इवेंट, वी विल हैंडल द क्वेश्चन विद नॉन फेवरेबल इवेंट. सी हियर, टोटल इवेंट इज इक्वल टू favorable event plus non-favorable event. Sometime in our question, finding favorable event is much easier, but sometime it is time consuming. अगर आप 1 tail, 2 tail, 3 tail, 4 tail calculate करेंगे, it is more time consuming. You take non-favorable other side. So favorable event निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, total event minus non-favorable. What is non-favorable? If you are all 4 boys, so there is one event which is against you, कि आप चारों boys हो. So similarly here, if you are looking for at least 1 tail, what is favorable for you? 1 tail, 2 tail, 3 tail or 4 tail. ये आपके favorable है. But if you are using 4 coin, tell me what is denominator, total event. 2 is to power 4, 60. Tell me non-favorable. Favorable मत बताओ, non-favorable बताओ. When all 4 head are there, had, 0 tail. आप कब हारेंगे? जब 0 tail आएगी. 1 tail you are going to win, 2 tail you are going to win, 3 tail you are going to win. If all 4 tail you are going to win, because you need at least 1 tail. When there is a 0 tail, then you will lose. तो 0 tail मतलब जब चारों head आएंगे. And how many event are there for all the 4 heads? Single event. आपके लिए एक event non favorable है out of 16. तो how many favorable event you have? 15 out of 16 is your probability. 15 event को manually add करना is time consuming. तो rather than finding favorable event, you can find total minus non favorable. तो यहाँ पे total minus non favorable से काम चल सकता है. Try one question. 5 coins are tossed. Find the probability of getting at least 1 tail. 5 coins are tossed. Find the probability of getting at least 1 tail. क्या है? 20 कहां से लाए? इतना अतरंगी नंबर कहां से लाए? 20. कितने कॉइन है? 5. टोटल इवेंट क्या होगी? 2 is to power 5. टोटल इवेंट्स आर 32. फेवरेबल क्या होगा? 1 tail, 2 tail, 3 tail, 4 tail, 5 tail. 1 tail निकालोगे, फिर 2 tail निकालोगे, 3 tail निकालोगे, टाइम कंज्यूमिंग. व्हाट इज नॉन फेवरेबल? 0 tail मींस ऑल 5 हेड. पांचों के 5 हेड आए तभी आप हार रहे हो, अदरवाइज आप हर जगह जीत रहे हो. हेड 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 हेड, पांचों हेड आने का एक ही इवेंट है. हेड 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 हेड. सो यू हैव वन इवेंट विच इज अगेंस्ट यू. Out of 32, one event is non-favorable. So how many favorable? 31 out of 32. Any doubt? अब तक हमने कॉइन में क्या सीखा? टोटल इवेंट 2 is to power x, वेरी सिंपल. फेवरेबल इवेंट में वन लेवल ऑफ क्वेश्चन वेयर वी हैव डन मैनुअली. मैनुअली इज एडवाइजेबल अप टू 3 कॉइन. 3 कॉइन तक तो मैनुअली कर सकते हैं, बट इफ नंबर ऑफ कॉइन आर 5, 6, 7, 8, आई डोंट सजेस्ट यू मैनुअली बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मोर टाइम कंज्यूमिंग. Then I have taken one particular question, at least 1 tail वाली condition, where finding favorable is more time consuming, total minus non favorable is easy.
क्योंकि यार नॉन फेवरेबल एक ही इवेंट है, नॉन फेवरेबल हेड 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 हेड, बॉय बॉय बॉय, 5 बॉयज आ रहे हैं वहां पे, एटलीस्ट 1 गर्ल हैज टू बी देयर इन दिस ग्रुप, 1 गर्ल हो या 2 3 हो 4 हो या 5 हो, बट 0 गर्ल और 5 बॉय होंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ ऑल 5 आर बॉयज, दैट क्रिएट द प्रॉब्लम. एनी डाउट? अब नेक्स्ट लेवल मुझे लेना है, बट आई हैव अ डाउट, वो थोड़ा डिफिकल्ट है. और लास्ट टाइम लाइक ड्यूरिंग द गणपति विसर्जन आई वाज टेकिंग फॉल्टी क्लॉक टॉपिक, 4 बार पढ़ाना पड़ गया मेरे को. जब भी पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवाज आ रही है बाहर से. लेट मी ट्राई, क्योंकि अभी थोड़ा दूर है तो समझ में आ जाएगा. वो जितना पास आते जाएंगे कंसंट्रेशन लेवल उतना लो होता जाएगा. नहीं आएगा तो कल पढ़ना ही है, वो तो अपना सेकंड ऑप्शन है ही है. लेट मी ट्राई. Okay, let me try a question. I link this coin and anagram. Let us try, like if in how many ways you can arrange, या पहले क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेता हूं. 7 coins are tossed. We can't use manually नहीं यूज करना है क्योंकि 7 coin है. Find the probability of getting exactly 3 head. Exactly 3 head. There are 2 steps, numerator upon denominator. What is denominator? Total event. There are 7 coin. What is total event? 2 is to power 7. What is 2 is to power 7? 128. Denominator is very easy. 2 is to power x. X is number of coin. Now, if you want favorable with manual, better to leave the question. But if you need 3 head, it means remaining 4 has to be tail. 3 head, 4 tail. Head, 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 tail, 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 tail. Head, head, head are identical. Tail, 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 tail identical. Now in anagram, in how many ways it can be arranged where you have 3 head 4 tail? Can we say 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial? क्योंकि 3 हेड कोई जरूरी थोड़ा ना एक साथ आएंगे. फर्स्ट थ्रो गिव यू हेड, थर्ड थ्रो गिव यू हेड, 7th थ्रो गिव यू हेड. आपको 3 हेड चाहिए, वो कैसे भी आ सकते हैं. पहला दूसरा तीसरा हेड आ सकता है, पहला दूसरा चौथा हेड आ सकता है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ हेड आ सकता है, फर्स्ट सेकंड 7th हेड आ सकता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ हेड आ सकता है. वी हैव टू सी हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी गेट 3 हेड. It can be first, second, third. It can be second, third, fourth. It can be third, fourth, fifth. It can be fourth, fifth, sixth. ऐसे manually you can't check. But you have to change it. Head कितनी बार अपनी position change कर सकता है? Here anagram will help you in how many different ways. 3H and 4T can be arranged. 7 क्योंकि ये 7 है. Why denominator? Because H, H, H is identical. T, 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 T is identical. We solve this. How we solve this? What is 7 factorial? 7 into 6 into 5 into 4 factorial. 3 into 2 into 1, 4 factorial cancel, 6 cancel, it is 35. So there are 35 favorable event you have. This is your answer. Here anagram will help. 3 head, 4 tail, हेड 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 टेल 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 टेल. अब ये हेड अपनी पोजीशन कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं? हियर योर एनाग्राम विल. इफ आई आस्क यू इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एच 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 टी 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 कैन बी अरेंज? सेम थिंग है. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एच 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 टी 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 कैन बी अरेंज? नेक्स्ट टाइम यू कैन से इट कैन बी लाइक दिस. 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है. तो इसको कैसे करेंगे? हाउ मेनी अल्फाबेट? 7 7 फैक्टोरियल. रिपीटिशन एच 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 3 फैक्टोरियल. टी 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 4. हेड तो सेम है ना. आपका हेड 2 रुपए का है या 5 रुपए का है? हेड हेड है. हेड इज आइडेंटिकल. हेड एंड कॉइन एज ए कंसेप्ट इज आइडेंटिकल. 2 रुपए का हेड 5 रुपए का हेड में डिफरेंट नहीं है. मैच में टॉस होती है, ठीक है.
हेड आया तो आपको बैटिंग करनी है, टेल आया आपको बॉलिंग करनी है, और ठीक है जब मेरी बॉलिंग का टाइम आएगा मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। तो वो टेल 2 रुपए के कॉइन से आया या 5 रुपए के कॉइन से आया, आपको तो बॉलिंग करनी पड़ेगी। टेल टेल इज अडंटिकल, हेड इज अडंटिकल, टेल 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 इज अडंटिकल, ये अडंटिकल है, इसको एच 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 लिख लो। बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट बट हेड एंड टेल्स आर अडंटिकल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही दोगे तो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 coins are tossed, find the probability of getting exactly 4 head. 8 coins are tossed, find the probability of getting exactly 4 head. Manual is going to be more time consuming. आपको डिनोमिनेटर निकालना है विच इज इजी, टोटल इवेंट एंड फेवरेबल इवेंट के लिए एनाग्राम विल हेल्प यू, आपको एनाग्राम हेल्प कर पाएगा। सिंप्लीफाई करो, कुछ तो डाउट है, हो सकता है सही। Tell me what are total event? 2 is to power 8. What is 2 is to power 8? 256. Favorable event, you need exactly 4 head, so it means the remaining 4 has to be 10. अब वो कैसे होगा? न्यूमरेटर 8 फैक्टोरियल क्योंकि ये 8 है, डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4h 40, तो ये क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल, ये 6 कैंसल, ये 2 कैंसल, 14 पंजा 70, 70 अपॉन 256 डिवाइड बाई 2, 35 अपॉन 128। हाँ सही है, कर दिया मैंने। जैसे एक क्वेश्चन और ट्राई। 10 coins are tossed, find the probability of getting exactly 3 tail. 10 coins are tossed, find the probability of getting exactly 3 tail. रौनक 140 is wrong, उसका आंसर 70 upon 256 था, maybe you have done some calculation mistake, try to check. Now here if 10 coin are tossed, tell me what are the total event? 2 is to power 10, 1024. We need tail, tail, tail. बाकी सब head होंगे 7 head. तो 10 factorial, 3 factorial, 7 factorial. So it is 10 into 9 into 8 into 7 factorial. 3 into 2 into 1, 7 factorial cancel. This is 3, this is 4. 12 into 10, 120.
So your answer is 120 upon 1024 use divided by 8. 8 से divide हो जाएगा. So here you can simplify it. Okay. 15 upon 128. Now here, next topic is dice. I try to take basic as कम से कम इसका basic तो सीख ही लेते हैं. Dice. ठीक है. कहाँ पढ़ाया? प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ाया ना. प्रोबेबिलिटी अलग है डाइस के लिए. इफ आई थ्रो वन डाइस, ठीक है, हाउ मेनी टोटल इवेंट्स आर देयर? 6. You get 1, 2, 3. So number of events we get 6. If I throw 2 dice, how many total events are there? I tell you. I give you a table which will help you in some of the question. So table लिख लो. See what you get. First dice give you 1. Second dice give you 1. First dice give 1. Second dice give you 2. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Or it can be first dice give you 2, second dice give you 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. So here total number of events are 36. Try. If I use 3 dice, I throw 3 dice. Here concept is 6 is to power x. From where 6 is coming, 1 dice give you 6 option. एक डाइस आपको 6 ऑप्शन देता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 बिकॉज कॉइन 2 दे रहा था, हेड एंड टेल, तो उसमें 2 बेस बन गया था. डाइस 6 ऑप्शन दे रहा है. 1 डाइस हैव 6 ऑप्शन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X represent number of dice. If I use 1 dice, there are 6 event. If I use 2 dice, 36 event. If I use 3 dice, 216. If I use 4 dice, how many total event will be there? 6 to the power 4, 1, 2, 9, 6. You can't check manually. ओके, क्वेश्चन कैसा पूछेगा? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, find the probability of getting 5. In a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total of 5. ठीक है, या एक क्वेश्चन करते हैं. इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 12. ठीक है, टोटल 12 निकालते हैं. एंड डाइस इज लाइक वेरी हिस्टोरिकल, मतलब बहुत पुराना गेम है, महाभारत के टाइम से, महाभारत के टाइम पे. ठीक है, हाँ उससे पहले भी हो सकता है, मुझे मेरी नॉलेज महाभारत से है. मामा स्कूनी कहते हैं, भांजे पो 12, तो ये तो है पो 12. 6 and 6. How 12 is possible? You get 6 and 6. How many total event are there? 2 dice. So 6 is to power 2. Total event are 36. Here also you have to manage 2 things: numerator and denominator. Denominator is very easy. 6 is to power x. X is number of dice. If I'm using 2 dice, total event 36. Numerator you check manually. पहली चीज बताता हूं मैनुअली, देन आई गिव यू टेबल. मैनुअली टोटल 12 कब आएगा? 6 plus 6, 6 and 6.
how many events will give you 6 and 6? 1. So you have one event which is in favor of you. So getting a total 12, your probability is 1/36. 36 इवेंट में एक इवेंट आपको 12 देगी. Now my question is, in a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total 5. I tell you two methods. Method 1 is manual. And believe me, this manual approach for UPSC question is advisable sometime. And even like we will try PYQ with the help of manual approach. I tell you how to handle manual approach. Like here, you went to a bar and your two friends, you order 5 beer. And condition is minimum एक तो पीनी पड़ेगी. You can't say मेरे नवरात्रे चल रहे टाइम. ठीक है, एक तो पीनी पड़ेगी. So here how you can consume? You take 1, your friend take 4. आपने 1 पी, आपके फ्रेंड ने 4 पी, टोटल 5. मैनुअल में सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कुछ रैंडमली चलोगे, आप सीक्वेंस वाइज बढ़ोगे. ठीक है, आपने स्टार्ट की थी 1 4, अब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, मतलब टेस्ट आना शुरू हो गया, नॉट इंटरेस्ट. फिर आपने 2 ली, आपके फ्रेंड के लिए 3 बचे. फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम you will take 3, your friend will take 2. Next time you take 4, your friend take 1. Next time you want to take 5, but आपका फ्रेंड आपका गला दबा देगा. मिनिमम 1 is there. डाइस में मिनिमम 1 वैल्यू होनी चाहिए. तो here how many events are there where you get a total 5? 1 4. पहला थ्रो 1 दे, दूसरा थ्रो 4 दे, 2 3, 3 2, 4 1. There are 4 events out of 36 events. The answer is 1/9. You have to understand manual. Manual approach भी आपको आनी चाहिए, because sometimes in exam we are not able to recall the table. I will give you table. मैं आपको table भी दूंगा, but manually भी try करते हैं. In a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total 7. Try this. Total 7. आप दो लोगों ने 7 beer order की, and you have to take minimum 1, or your friend also has to take minimum 1. In how many ways you can consume, or you get 7, total 7. Total event 36. Total event 36. Total event depend on number of dice, 6 is to power 2, total event 36. Here total 7 कब आएगा? चलो चलो चलो, हाँ ठीक है, सही जा रहे हो. 2 और 5 होगा, 2 4 नहीं होगा. You are fast, sir. One 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1. So there are total 6 favorable event out of 36. Your answer is 1/6. See what you have to do when you have to do manually. You have to follow the sequence. And second thing is, in a dice, minimum value 1, maximum value 6. Try to start with minimum if possible. Otherwise, we start with the maximum. Let me take one more question. In a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total 10. You can't start. Just wait. 1 and 9. क्योंकि दूसरा इंसान 9 नहीं पी सकता. मिनिमम 1, मैक्सिमम 6. यहां पे मैक्सिमम की भी कंडीशन है. So you start with the largest number possible. You order 6 for yourself. आपने खुद के लिए 6 बियर ऑर्डर की, आपके फ्रेंड के लिए 4. नेक्स्ट टाइम अपने लिए घटाते जाना, उनके लिए बढ़ाते जाना. 5 5 4 6. So it means there are 3 favorable event out of 36. Your answer is 1/12. See, manual approach में I tell you there are 2 rules. One is you have to follow the sequence, which is very very important. Second is either start with the minimum value which is 1, or start with the maximum value 6. यहाँ पे 1 से start नहीं कर सकते, because other friend can't take 9, because there is a condition 1 to 6. एक और try कर लो. In a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total 9. Total 9.
हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट? 4. टोटल इवेंट 36. कैसे? 9 कैसे होएगा? 6 and 3, 5 and 4, 4 and 5, 3 and 6. So there are 4 events out of total 36. Answer is 1 by 9. I give you a table now. This is manual approach. You have to be good. Now table. 2 dice sum. 2 dice में sum and event. यहां पे लिख लो 2 dice sum events. Getting a total 2 कब आएगा? 1 and 1 there is 1 event, or getting a total 12 there is 1 event. Getting a total 2 there is 1 event, getting a total 12 there is 1 event. 12 के लिए भी एक इवेंट है, 2 के लिए भी एक इवेंट है. 2 के लिए क्या इवेंट है? एक बियर आपने पी, एक आपके दोस्त ने पी. इसको बढ़ाओ, इसको 3 and 11 there are 2 इवेंट्स. 3 के लिए भी 2 इवेंट है, 11 के लिए 2 इवेंट है. 4 10 3 event. Getting a total 4 there are 3 event, getting a total 10 3 event. 5 and 9 4 event, getting a total 5 4 event, getting a total 9 4 event. 6 and 8 5 event. 7 6 event. 7 के लिए maximum number of event है 6. You can check. देखो, we observe this table diagonally. Getting a total 2 there is 1 event. Getting a total 3 1 2 2 1, you get 3 here. You have 2 event. Getting a total 4 1 plus 3 2 plus 2 3 plus 1, you have 3 event. Here getting a total 5, you have 1 4 2 3 3 2 4 1, you have 4 event. Here you have 5 event. Maximum you have 6 event. यहाँ पे जो भी है, फिर उल्टा जाएगा. 5 4 3 2 1. 12 के लिए 1, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3, 9 के लिए 4, ठीक है, 8 के लिए 5. But better we work on this step. Getting a total 2 12 1 event, 3 11 2 event, 4 10 3 event, 5 9 4 event, 6 8 5 event, 7 6 event. Now next is tomorrow we will work. Sir, please explain this table again. 2 कब आएगा? 1 and 1 there is 1 event. 12 कब आएगा? 6 and 6 1 event. यहां लिख देता हूं 6 and 6. 3 कब आएगा? 1 and 2 2 and 1. 11 कब आ सकता है? 6 and 5 5 and 6. 4 कब आएगा? 1 plus 3 2 plus 2 3 plus 1. तो यू कैन चेक, ये इससे पता चल जाएगा. Getting a total 2 there is 1 event. 3 1 plus 2 2 plus 1 2 event. 4 में 1 plus 3 2 plus 2 3 plus 1. Okay, tomorrow what we will do, we will take question on 3 dice. 4 dice I never seen question. 3 dice तक का ही मैनेज हो जाए, more than enough है. Like here एक example दे देता हूं, you can try at your home if you can. In a single throw of 3 dice, find the probability of getting a total of 10. मतलब 3 डाइस में टोटल 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ओके, दैट यू हैव टू ट्राई. जस्ट ट्राई एट योर होम. टुमारो आई विल डिस्कस. देयर इज वन मोर क्वेश्चन, लिख लो. इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिख लो. इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस,
in a single throw of 2 dice, find the probability of getting doublet. Doublet आने की क्या probability है? What is doublet? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. How many doublet are there? 6. How many event are there? 36. Write your answer 6 by 36 doublet के लिए. One more question. In a single throw of 3 dice, find the probability of getting triplet. Find the probability of getting triplet. In a throw of 3 dice, find the probability of getting triplet. Single throw of, लिख लो. In a single throw of 3 dice, find the probability of getting triplet. What is triplet? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6. How many events? 6. How many total event? 260. There will be a direct question, doublet, triplet, तो वो तो बड़ा easy है. Okay. Fine. या आज ही कर ले 3 डाइस वाला, बट मुझे आवाज आती नजर आ रही है बस, और डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा. कल करेंगे, आज टेस्ट भी नहीं है. यू एंजॉय. ठीक है. टुमारो वी विल डू दिस प्लस क्वेश्चन ऑन कार्ड्स. टुमारो. अच्छा, आपका एक हैंड आउट है बुकलेट में, एक छोटा सा ही हैंड आउट है, ज्यादा बड़ा नहीं है. इन योर बुकलेट पेज नंबर 10 9 10. ज्यादातर क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी बच्चे आप कर लेना. यू ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क. टुमारो आई गिव यू वन एक्स्ट्रा हैंड आउट. देयर विल बी 50 क्वेश्चन. पूरे टॉपिक पे 50 क्वेश्चन होंगे लगभग. तो यू हैव टू ट्राई. हाँ यही है ना, ये रहा. ये तो आपका आज का होमवर्क हो गया. हाँ ये सारे करना है, ये हो जाएंगे क्योंकि हो चुका टॉपिक. अच्छा ये 14 तो मैं कल बता दूंगा. ये तो हो जाएगा. हाँ 1/4 आएगा. एग्जैक्टली 3 टेल. एक और होगा. कहाँ पे लिया आपने? 3 टेल पहला हेड ले लिया, और कहाँ लिया? ये आपने रिपीट कर दिया, सेम ही तो है. अच्छा चौथा हेड. एक और लिख लो. ये टेल हेड टेल टेल. देखो कहाँ पे है ऐसा. ये रहा. नहीं डू रिवाइज. ठीक है, जो किया आज हमने एनाग्राम किया है, डाइस न कॉइन किया है, डाइस थोड़ा इंट्रोड्यूस किया. God bless you. Okay, see you tomorrow. I will discuss question number 14 tomorrow. Online student, don't worry. Question number 14 from that handout I will discuss tomorrow. Deliberately अभी मैंने छोड़ा है क्योंकि आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. You will understand it is easily. कौन से का? क्या पूछा था मैंने? क्या टोटल क्या पूछा था? 10. टोटल 10 पूछा था ना. 27/216. टाटा बाय बाय. आज तो लोग गणपति को बाय बोल रहे हैं. क्या प्रॉब्लम है? What is your personal problem? My roommate is speaking to his girlfriend till 11 p.m. 11:30. The lights are on. Then how can I sleep, sir?
I just tell you this permanent solution of this. And I have to wake up at 4 a.m. next day. Okay, online student, bye bye, take care. कर दो end class.